Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. We are studying chapter 5 industry and our today's topic of discussion is secondary industry. So we will talk about secondary industry in detail. So you will be able to understand the evolution of secondary industry from ancient times to modern day industry. Student, as all of you know that secondary industry is the second level of industry and this takes raw materials that is produced in the primary sector and transform them into goods. So all the things that we see around us, whether they are tins or trains, they are needles, cloths, whether it is a nuclear plant, shoes, satellite, ship, cars, any vehicles, chairs, tables, all these things are manufactured in factories. So all these things that are manufactured in a factory or in industry can be seen or touched. They are the physical products. So let's see how the secondary industry evaluated from ancient times to modern day industry. यानी कि पहले जब पास्ट में जब सेकेंडरी इंडस्ट्री वॉज स्टार्टिज व्हेन देयर वर हाउ द थिंग्स वर मेड इन द पास्ट एंड हाउ द थिंग्स आर मेड nowadays. Handwork and craftsmanship. Students, in earlier times everything was made by hands. There was no use of machines. So different articles were made right from start to finish by one person. यानी कि कोई भी आर्टिकल, कोई भी चीज़ जो है वो लोग जो कोई भी एक शख्स अपने हाथों से बनाता था और शुरू से लेकर एंड तक उसको फिनिश जो है वो वही शख्स करता था. ऐसा नहीं था कि एक काम एक शख्स करता या दूसरा काम दूसरा. सो all the articles has to be finished by only one person, and as one person had to do it, so this was a slow process, and the finished articles depended on the skills of craftsmen, as there were good workers and bad workers. यानी कि जो प्रोडक्ट्स या चीज़ें जो तैयार होती थी उनकी क्वालिटी जो है वो डिपेंड करती थी कि हाउ स्किल्ड इज़ द वर्कर. So as whenever there is something, it has some advantages and the disadvantages. So the advantage of handwork of craftsmanship is that the individual can create different designs and patterns, and if necessary according to the buyer's wishes. यानी कि जब लोग बाय हैंड काम करते थे तो उसका एक फ़ायदा ये था कि वो डिफरेंट और यूनिक डिज़ाइंस जो हैं वो क्रिएट करते थे, क्योंकि हैंडवर्क जो है वो हमेशा से यूनिक और डिफरेंट रहा है. और जहाँ पर उन्हें ज़रूरत होती थी, अगर जो बायर्स की विशेस के मुताबिक उसमें चेंजेस जो है वो आसानी जो है वो की जा सकती थी. एंड अनदर इम्पॉर्टेंट एडवांटेज इज़ दैट देयर इज़ अ प्राइड इन ओनिंग अ हैंड मेड प्रोडक्ट एज इट इज़ यूनिक, द ओनली वन लाइक इट. कि आप प्राइड फील करते थे, फ़ख्र महसूस करते थे कि हमने हैंड मेड चीज़ जो है वो हम उसके मालिक हैं. As these are the advantages of handwork. Similarly, there are some disadvantage. And what are they? As all the things are made from start to finish by only one person with their hands, so it is a slow process. Different craftsmen have different skills, and the finished article depends on the skill of the craftsman, as there are good workers and poor workers. So the quality of the work, द फिनिश्ड आर्टिकल डिपेंड करती थी कि किसी क्राफ्ट्समैन की, किसी कारीगर की स्किल जो है वो कितनी अच्छी है, वो कितना अपने काम में माहिर है. इफ़ इज़ अ गुड वर्कर तो वो जो क्राफ्टमैन है, जो आर्टिकल है वो बहुत अच्छा होता था. अदरवाइज़ उसकी क्वालिटी जो है वो इट कुड बी पुअर. एंड द हैंडवर्क इज़ यूजुअली मच मोर एक्सपेंसिव बिकॉज इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम जनरली टू मेक. और हैंडवर्क का काम चूँकि एक ही शख्स शुरू से लेकर आखिर तक करता था, दैट्स वाई इट्स वेरी एक्सपेंसिव, और इसको कंप्लीट करने में काफ़ी टाइम जो है वो लगता है. सो दैट इज़ द डिसएडवांटेजेस ऑफ हैंडवर्क और क्राफ्ट्समैनशिप. नाउअडेज़ अगर आप देखें, इफ़ यू वांट टू बाय सम हैंडीक्राफ्ट or the thing that is made by hand, it is also very expensive. For example, if you take the example of designer clothes, some designer clothes are available for all the public, all the people, but there are designers who design special clothes, special dresses for your for someone's special occasion. So they are very expensive, and there is no other design like that. So there is advantage, it is unique and different, एंड डिफरेंट पैटर्न्स और डिज़ाइन पे एंड अकॉर्डिंग टू द बायर्स विशेस जो है उसको डिज़ाइन किया जा सकता था. और उसका डिसएडवांटेज जो है वो क्या है? इट इज़ अ स्लो प्रोसेस, इट इज़ एक्सपेंसिव, एंड ऑल दी क्वालिटी एंड ऑल द वर्क डिपेंड्स ऑन द स्किल ऑफ द वर्कर. सो students, as
in early times everything was made by hand, but with the passage of time there was use of machines. So machines जो थी that was started to use in early factories, but it did not speed up until the advent of steam engine. In the 19th century, the steam engine became common source of energy. The steam engine is traditionally attributed to James Watt, a Scotsman born in 1736, and he was a kind of engineer. और अगरचे इससे पहले भी बहुत से स्टीम इंजन जो हैं वो मौजूद थे, लाइक इफ़ यू रिमेंबर कि वी हैव डिस्कस्ड इन द टॉपिक ऑफ माइनिंग दैट इज़ थॉमस सेवरी, दैट ही इन्वेंटेड द स्टीम इंजन इन 1698, बट इट वाज स्लो. उनका प्रॉब्लम जो था कि दे वर स्लो, क्लमजी एंड यूज एनॉर्मस अमाउंट ऑफ फ्यूल. So Watt realized its weaknesses and made some changes in it and invented what was more or less a completely new system. उसने एक totally new system जो था steam engine का जो था वो introduced करवाया, and Watt's engine was instantly a great success. So first these steam engine were used in coal mines. Soon it was being used in factories to turn the machinery. So when the steam engine was started to turn the machinery, it speeded up the production. The manufacturing process became faster. One worker with a steam engine could produce 20 to 30 times as much as manual worker, and the quality of work was much more even than the work. कि जो लोग मशीन के ज़रिए, जो मशीन से उसके ज़रिए लोग जो हैं उनकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 20 से 30 टाइम्स जो है वो ज़्यादा हो गई. एंड ऑर्डिनरी वर्कर्स हु कुड नॉट अफोर्ड दीज इंजन्स, बट सम रिच men set up factories and the people had to go there to work. So machines जो स्टीम इंजन के इस्तेमाल के साथ कैपेसिटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी जो थी वो 20 to 30 टाइम्स जो है वो इंक्रीज़ हो गई, एंड द क्वालिटी ऑफ द वर्क वाज मच इवन दैन द वर्क डन बाय द हैंड्स. उसमें ज़्यादा इवन काम जो है, ज़्यादा बेहतर काम जो है वो होना शुरू हो गया. There are advantages and some disadvantages of early factories, that is machine operated. And look at the advantage. The advantage was that far more articles were made, so that prices were lower and more people could own things, a move towards a higher standard of living. So इसका advantage जो था वो ये था कि as the things were made on machines, चनाचा ज़्यादा चीज़ें जो थी वो बनना शुरू हो गई, प्रोडक्शन जो थी स्पीड अप, और प्राइसेस जो थी वो लोअर हो गई, कम हो गई, एंड पीपल कुड ओन मोर थिंग्स, एंड दैट वाज अ मूव टुवर्ड्स अ हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. As the work was done largely on machines, the quality of thing was much more even than the handmade work. और उनका जो काम जो था हैंडमेड वर्क की निस्बत ज़्यादा इवन और ज़्यादा स्मूथ जो था, सेम काम जो था वो हर मरतबा मशीन्स जो हैं वो उसको हर मरतबा सेम क्वालिटी ऑफ वर्क जो थी वो प्रोड्यूस करती थी. बट एज दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ अर्ली फैक्ट्रीज दैट इज़ ऑपरेटेड बाय मशीन्स, देयर आर सम डिसएडवांटेजेस. इसका कुछ डिसएडवांटेजेस जो थे वो भी थे. एंड व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस? कंडीशन इन फैक्ट्रीज वर टेरेबल विद वेरी लॉन्ग टायरिंग शिफ्ट्स. ये बहुत बुरे हालात थे फैक्ट्रीज़ में, and generally at that time small children were having to work. Now there was working condition जो थी वो उनकी जो थी वो वहाँ पे अच्छी नहीं थी. The factory owners would not allow even a window to be opened, as the textile, especially in the textile mills which needed a warm moist atmosphere, and factories had to be generally in town, so that the masses of the cheapest row of houses were thrown up for the workers. While इसके opposite, people in the past had work at their own pace and had a rest when they felt like it. कि जब हाथ से लोग काम करते थे तो जब उनका दिल करता था वो रेस्ट कर लेते थे. But now the situation was totally different. In the factory they had to keep going as long as the steam engine was running. जितना steam engine जब तक काम करता रहता था उन्हें काम करना पड़ता था. And another disadvantage was that the factory owner were often cruel and about getting the maximum profit out of their worker. कि they wanted to earn more profit, so they kept them on working. So these were the disadvantages of early factories that were machine operated. Congested जगह पर जो है वो machines लगाते थे. Hygienic situations जो थी वो नहीं थी.
people were not allowed to take rest, they had to do a lot of work as compared to the hand work जहाँ पे वो अपनी मर्ज़ी से जो थे वो काम करते थे. But the main advantage of early factories was it that the production of speeded up, and similarly the work was more even as compared to the hard handmade work. Students, although the advent of steam engine to power industry speed up production, but the great breakthrough did not come until the introduction of the assembly line process in World War II. इन कैलरी फैक्ट्रीज़ अगरचे उसमें प्रोडक्शन जो थी वो काफ़ी स्पीड अप हुई, काफ़ी इंप्रूवमेंट जो थी वो आई, लेकिन जो सेकेंडरी इंडस्ट्री है उसमें जो ग्रेट ब्रेक थ्रू है डैट वाज ड्यू टू assembly line process. And now what is assembly line process? Basically assembly line process is a manufacturing process often called a progressive assembly, in which parts are added as the semi-finished assembly moves from workstation to workstation, where the parts are added in sequence until the final assembly is produced. It means the distribution of the work, यानी कि आपके सामने जो एक कन्वेयर बेल्ट है उसके ऊपर डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो मूव करते रहते हैं, एंड एवरी पर्सन हैज़ टू डू हिज ओन वर्क. एक ही काम जो है वो करता है, एंड फाइनली एट द एंड सीक्वेंस के साथ ये काम किया जाता है, एंड एट द एंड द फाइनल प्रोडक्ट जो है वो रेडी हो जाती है. सो हेयर यू कैन सी दीज आर दी अदर एग्जांपल्स ऑफ assembly line process. And let's discuss when it started. Early in the 20th century, it was realized that if each workman did just one operation in making something, he could do it much faster than if they were to assemble a whole operation or had a number of operation to do. यानी कि 20th century में आफ्टर द वर्ल्ड वॉर वन इट वॉज फेल्ट कि अगर आप काम की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कर दी जाए और एक शख्स को एक ही काम सौंप दिया जाए तो वो उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकेगा, उसकी स्पीड जो है वो उसमें ज़्यादा बेहतर हो जाएगी एक ही काम करने से, बजाय इसके कि वो कोई एक ही चीज़ जो है वो उसमें डिफरेंट ऑपरेशंस जो हैं वो करे, या वो एक चीज़ मुकम्मल तौर पर जो है वो तैयार करे. फॉर एग्ज़ाम्पल, on a car production line, if worker A would put a nut on a bolt, and the line worker B and line would move on to worker B who would tighten it up and so on. यानी कि इसकी एग्जांपल आप ऐसे लें कि कार प्रोडक्शन में अगर एक वर्कर ए का काम जो है वो नट जो है वो बोल्ट पे लगाना है तो वो सिर्फ यही काम जो है वो परफॉर्म करेगा, दूसरा काम जो है वो नहीं करेगा, वाइल द वर्कर बी जो है वो उस नट को टाइट करेगा. सिमिलरली उसके बाद काम जो है वो आगे मूव कर जाएगा एंड वर्कर सी विल डू सम अदर जॉब. सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क जो है उसमें एक काम जो है वो किसी एक ही वर्कर को जो है वो असाइन हो जाता है, एंड सो ऑन जो काम जो है वो कंटिन्यू रहता है, एंड फाइनली द प्रोडक्ट इज़ at the final level. And students, the idea of assembly line was first conceived by the American industrialist Henry Ford. Henry Ford is the owner of a motor car company, so who is making cars, Ford, and he developed the conveyor belt system to make his early motor cars. He was the first person, उसने अपनी मोटर्स कार बनाने के लिए, you can see in the पिक्चर कि उन्होंने मोटर कार्स बनाने के लिए कन्वेयर बेल्ट जो है उसका सिस्टम जो था वो इंट्रोड्यूस करवाया, और इसी सिस्टम को जो है इट इज़ ऑल्सो नोन एज द असेंबली लाइन प्रोसेस. एंड एज विद द इंट्रोडक्शन ऑफ असेंबली लाइन process there was a great breakthrough, and this resulted in the production line process in which each worker performed just one task as the work passed in front of him on moving conveyor belt. And as a result the output or capacity increased several hundred times quicker than by a single man working on his own. So similarly assembly line process also has some advantages and the disadvantages. The first advantage is again it speed up the production. So the goods become, the output was so that goods become cheaper, more people could afford furniture in their homes and an improved lifestyle. There was a much wider range of goods available to make people's life better because the output was so much more, hours of works were steadily shortened. प्रोडक्शन जो थी वो काफ़ी स्पीड अप हो गई,
अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स जो थी वो इंक्रीज़ हो गई, जिसकी वजह से चीप हो गई. सो लोगों का जो था वो दे कुड अफोर्ड मोर थिंग्स नाउ. सो देयर लाइफस्टाइल जो था उनका इम्प्रूव हुआ. इसके साथ साथ जो है एक वाइडर रेंज ऑफ गुड्स जो थी डैट वाज अवेलेबल इन द मार्केट. और एज द आउटपुट वाज सो मच, सो जो वर्किंग आवर्स जो थे वो भी थोड़े से स्टेडीली जो थे वो कम जो है वो होते गए. और इसका डिसएडवांटेज जो है वो क्या है, द वर्क वॉज वेरी बोरिंग एज ईच वर्कर डिड जस्ट वन प्रोसेस. कि एक ही काम चूँकि वर्कर को थ्रू आउट करना होता था तो इसलिए वो बोरिंग हो जाता था. उसमें मोनोटनी जो है वो आ जाती थी, कोई नई चीज़ उसके पास करने के लिए नहीं थी. देयर वाज नो सेंस ऑफ क्रिएटिंग अ गुड प्रोडक्ट. जो आप हैंडवर्क में जो आपको प्राइड फील करते थे कि ये प्रोडक्ट जो है इट इज़ क्रिएटेड बाय माई सेल्फ, वो जो थी ख़त्म हो गई. उसमें कोई क्रिएटिविटी जो है वो सेंस ऑफ क्रिएटिंग गुड प्रोडक्ट जो थी वो ख़त्म हो गई. एंड वर्कर हैड टू कीप अप विद द असेंबली लाइन, दे कुड नॉट टेक रेस्ट. अब चूँकि असेंबली लाइन में कन्वेयर बेल्ट पे मूवमेंट जो है वो कंटिन्यूसली रहती है एंड वन हैज़ टू परफॉर्म हिज टास्क वेरी क्विकली एंड ही कुड नॉट स्टॉप. क्योंकि वो जो चीज़ है जो सेम वर्क आपने करना है, फॉर एग्जांपल अगर आपने बोल्ट जो है उस नट जो है वो बोल्ट पे लगाना है, तो अगर आप थोड़ा सा भी स्लो होंगे तो आपका जो वो एक बोल्ट जो है उसके ऊपर नट लगाने से वो मिस कर जाएंगे. सो वन हैज़ टू वर्क और कीप अप विद द असेंबली लाइन. अब उसकी वजह से जो है ऑब्वियसली देयर आर प्रॉब्लम्स. आप रेस्ट जो है वो यू कुड नॉट टेक रेस्ट although there were emergency buttons to stop the moving belt if there was a problem. and sometimes जो workers जो हैं वो deliberately भी उसको stop कर देते थे and no one could understand कि whether it is done because of an accident or deliberately किसी ने जानबूझ के ये काम जो है वो किया है. as because there was a number of assembly lines linked, all the others had to stop too, and it took perhaps half hour to reprogram them again. So during these times the workers had a rest. Sometimes जो वो जानबूझ के भी ऐसे कर लेते थे so that they could take rest, and that's the main problem. So as this is it is monotonous and prepared ground for the processes being taken over by machines, apart from some supervisory staff to see that things are going correctly. सो असेंबली लाइन प्रोसेस का जो एक और डिसएडवांटेज जो है वो ये है कि इसमें चूँकि बोरिंग काम है, मोनोटोनस काम है और इट प्रिपेयर द ग्राउंड. इसने जो है असेंबली लाइन प्रोसेस जो है इट प्रोवाइडेड और इट प्रिपेयर द ग्राउंड्स फॉर द प्रोसेस बीइंग टेकन ओवर बाय मशीन्स. यानी कि मशीन्स के लिए इन्होंने रास्ता जो था वो हमवार किया. एंड इट रिज़ल्ट्स, क्योंकि जब आप असेंबली लाइन प्रोसेस में मुख्तलिफ लोग जो हैं वो काम कर रहे होते हैं, तो जो ऊपर जो सुपरवाइज़र्स है यू नीड ओनली सम पर्सन टू सुपरवाइज़ द थिंग्स के क्या काम जो है वो सही तरह से जो है हो रहा है या नहीं हो रहा. सो असेंबली लाइन प्रोसेस जो है इट gives way to the automated factories or machines. And an automated factory is a place where raw material enter and finished products leave with little or no human intervention. Students, as you know that with the progress of science and technology, there is a lot of improvement in the machineries, and today automated factories are very common. And automated factories जो हैं वो ऐसी factories हैं जहाँ पर फिनिश प्रोडक्ट्स जो हैं दे आर मेड बाय रोबोट्स और मशीन्स, और उसमें बहुत ही कम ह्यूमन बींग्स की इंटरवेंशन जो है वो होती है, या बहुत ही दे हैव वेरी फ्यू ह्यूमन बींग्स और सुपरवाइज़र्स उस चीज़ों को जो है वो सिर्फ सुपरवाइज़ करते हैं. ऑल द अदर थिंग्स आर डन बाय, ऑल द वर्क इज़ इन द फैक्ट्री इज़ डन बाय मशीन्स और द रोबोट्स. So nowadays robots are taking place of human beings in different fields, whether it's agriculture, restaurant, factories, and computerized robots are performing most of the routine function in modern industry. Robots can be programmed to do a range of tasks from heavy duty to precision work. कोई भी काम उनको जो है वो दिया जा सकता है. Same is in the automated factory, which still have production lines, but instead of workers doing all of the operations, these are done by machines and robots. Often a large or huge factory floor can be controlled by one or two men sitting at a desk pressing switches to operate the electronic equipment that makes the goods. It is said that यानी कि
मोस्टली जो आजकल ऑटोमेटेड फैक्ट्रीज़ हैं जहाँ पर यू कैन सी इन द पिक्चर के कार्स और बहुत सारी जो डिफरेंट चीज़ें जो बनने वाली फैक्ट्रीज़ हैं वहाँ पर ये सारे काम जो हैं वो कंप्यूटराइज रोबोट जो हैं वो अंजाम दे रहे हैं। और जो वहाँ पर ह्यूमन बींग्स जो हैं दैट इज़ उनका काम जो है वो जस्ट टू कंट्रोल, जस्ट टू सिट एट अ डेस्क एंड प्रेस स्विचेस टू ऑपरेट द इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। सो जो गुड्स जो हैं वो बना रहे हैं। और इसकी एग्जांपल जो है वो इट इज़ दैट Renault car production line in France, that is the largest in the country, is managed by only 4 men. So students, as the automated factories have also some advantages and there are some disadvantages of it. The production again soared so that goods were cheaper and a much wider range was available. Again चूँकि all the things are done by मशीन्स और रोबोट्स, सो मेन एडवांटेज जो था वो इसमें ये था कि उस प्रोडक्शन जो थी वो फिर बहुत ज़्यादा जो थी वो हो गई, चीप हो गई एंड मच वाइडर रेंज वॉज अवेलेबल एंड virtually all chances of human and faulty products, human error and faulty products are eliminated. कि वो जो पहले ह्यूमन एरर्स में जहाँ पर असम्बली लाइन प्रोसेस में जहाँ पे सम टाइम कोई फॉल्ट आ जाता था या मिस हो जाता था या इंसान थक जाते थे या कोई चीज़ मिस कर जाते थे, वो सारे फॉल्ट या वो सारे एरर्स जो थे वो ख़त्म हो गए, उसका कोई चांस जो था वो नहीं रहा क्योंकि all these works are now done by the robots. So worker could make mistakes even with their one operation on the assembly line, while machine did not make any mistakes, क्योंकि machines जो है वो कोई mistakes जो है वो नहीं करती हैं. So faulty productions का और human error का जो chance जो है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया. ये इसका जो था वो एक बेनिफिट था, इसका फ़ायदा था. लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस जो हैं वो ज़्यादा हैं. फर्स्ट डिसएडवांटेज इज़ दैट एज फार फ्यू वर्कर्स आर नीडेड विच कैन लीड टू दी अनएम्प्लॉयमेंट. चूँकि human beings जो हैं they are only few workers are required, so most of the work is done by the machines और machines जो हैं वो they can work 24 hours. so unemployment जो थी वो that is the main issue of automated factory. And secondly, there is no pride in work or craftsmanship when all one has to do is sit at a desk and watch dials and press buttons. कि काम जो है वो किसी का भी किसी एक शख्स ने जो है वो सिर्फ डेस्क पे बैठ के बटन्स और डायल्स जो है वो प्रेस करने हैं एंड देयर इज़ नथिंग एल्स ही हैज़ टू डू. सो देयर वाज नो प्राइड इन वर्क एंड क्राफ्टमैनशिप एंड देयर इज़ नथिंग दैट इज़ प्रोड्यूस्ड यूनिक और इन अ डिफरेंट डिज़ाइन. सो दैट इज़ द disadvantage of the automated factories. So students, now you must understand कि first in the early times things were made by hands, so handmade things that have their own advantages and disadvantages. Similarly, with the passage of time the machines were invented, and with the invention of steam engine there was a great change in secondary industry. But the great breakthrough was after in 20th century when assembly line process was discovered or introduced by Henry Ford, that is an American industrialist. So it introduced the distribution of a work. Only one work was assigned to a worker, and the assembly line process also prepared a ground for the automated or robot factories. And in these factories all the work is done by the robots or the machines, and there are very less chance of there are no chance of human error and faulty products. And similarly it also leads to the unemployment, and the result of all these things is that a lot production capacity increased a lot. Now a lot of things are available in the market and it has improved the living standard of people. Now you can see if you ask your parents in the olden time, you have more cheap and more variety of things. For example, if you look at the electronics, so every house has some everyone at your home must have a mobile phone. There are ACs, LCDs, computers, laptops. See, all these things are now quite cheap. If you look at the past, तो ये past में ये चीज़ें जो हैं they were quite expensive. It was not possible for everyone to afford these things, and all these things, all these situations became possible only because of the
automated factories or machine operated factories, or the things that is made in factories with the help of machine and latest technology. So students, we have discussed what was the evolution of secondary industry. So now let's see what are the types of secondary industry. Secondary industry can be divided into three industries, that is cottage industry, small industry and the large industry. Cottage industry is a small industrial unit which the owner and his or her family run themselves. बहुत ही छोटे यूनिट जो है वो होता है जिसमें घर के सिर्फ लोग और फैमिली जो है वो उसको रन करती है इस बिज़नेस को, लाइक मेकिंग पोट्री, मेकिंग ऑफ ट्रेडिशनल शूज़, लाइक मेकिंग ऑफ एम्ब्रॉयड्रीड क्लॉथ्स, कटलरी, हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह, ये जो है कॉटेज इंडस्ट्री में जो है वो आते हैं. वाइल स्मॉल इंडस्ट्री, it is also a very small unit but it employs 6 to 9 workers, और इसमें जो एग्जाम्पल्स हैं स्मॉल इंडस्ट्री की, डैट इज़ पोल्ट्री फार्मिंग, बी कीपिंग, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्पोर्ट्स गुड्स, हैंड वीविंग कार्पेट्स, etc. Similarly, large industry is also known as the heavy industry, and it is the backbone of any industry. If a country has good large industry or heavy industry, it will develop or it will progress by leaps and bounds. And a heavy industry or a large industry is an industry where a large amount of large or heavy articles are manufactured, and it has great use of heavy machinery, and there are a large number of employees, and it needs a lot of capital and proper place and machinery. So let's see what are the industries of Pakistan. Students, we know that Pakistan is an agricultural country, but Pakistan is also having some good industries, and the main industries of Pakistan is sugar industry, cement industry, textile industry is very popular and one of the biggest or largest heavy industry of Pakistan, as Pakistan exports a lot of its textile, which includes cotton cloths and silk cloths. Similarly, leather industry and paper industry, printing industry, steel and iron and steel industry, carpet industry, surgical instruments की industry जो है, petrochemical industry, fertilizers की industry and cement industry. These are some of the main industries in Pakistan. So student, that's all for today's. I hope you have understood the topic. So please read the topic on page number 48 and 49 very carefully, so that you can understand the topic very clearly. Read, and after reading your book, do the question number 2. It is think of the advantage and disadvantage of each of these methods of production, like handwork and craftsmanship, early factories or machine operated, assembly line process, automated factories and robots. So students, you can find the advantage, only one advantage. You have to write only one advantage and one disadvantage of each of these methods. You can find it in the video, and you can also find it the answer in your book. I hope you have understood. Okay, thank you. Allah Hafiz.